सभी का स्वागत है। हम आए हैं मोहन मेडिकल में और यहाँ पर हो रहा है बहुत बड़ा कैंप जो कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर उन्होंने किया है। तो हमारे साथ है हरीश जी और हरीश जी से चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये कैंप के कैसे चला रहे हैं और इनका आज क्या उद्देश्य है। हरीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार और सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। और आज हम लोगों ने यहाँ पर 5 डॉक्टर लोगों को सुबह से फ्री कैंप के लिए लगा के रखा था। नॉर्मली कहीं दूसरे कैंप वगैरह में जाते हैं तो खाली जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, साधारण सी चीज़ें ही फ्री होती हैं, लेकिन जहाँ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है वहाँ कोई फ्री में या फिर निःशुल्क कोई नहीं कराता है। तो हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, बोन डेंसिटी चेक, डेंटल, उसके बाद में हमारे पैनल में पल्मोनोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। तो जहाँ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है वो चीज़ भी आज हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। और सुबह हम लोग 6 बजे से शुरू किए थे। 6 से लेकर 10 बजे के अंदर अंदर करीबन 150 लोग आए जिन लोगों को सिर्फ शुगर और डायबिटीज़ वगैरह चेक करानी थी। और उसके बाद अभी तक करीबन 100 मरीज और आ गए जिन लोगों को अलग अलग तरीके की सुविधाओं की ज़रूरत थी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये जो आपने जो कैंप चालू किया ये इसका एडवर्टीजमेंट आप कैसे कर रहे हैं लोगों तक और व्यापक रूप से पहुंच सके सारी इन्फॉर्मेशन? ये हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट समय में हम लोगों ने तैयारी की थी, इसके कारण हम अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंच नहीं पाए। बट ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ की बात है कि जितना हम लोग पहुंचे उसमें हम लोगों को ये रिस्पांस आया है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई समाज में कितने लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है। अगर हम लोग भविष्य में ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे तो इससे और ज़्यादा रूप में ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आगे आपको इस कैंप को आगे और इसको सक्सेस को देखकर के आगे और चलाना है। अगर चलाना चाहते हैं तो बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को आप क्या बोलना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर होते हैं जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि यहाँ पे हम लोग एवरी संडे इस तरीके का कैंप चला रहे हैं जहाँ लोग बिना मतलब निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा लोगों के लिए भी और हमारे कैंप के लिए भी। तो नेक्स्ट कैंप आपका आप कुछ रखने वाले हैं, कुछ प्लानिंग या कोई डेट अभी से कुछ है? तो अभी के लिए हमारा ये 3 सप्ताह के लिए कैंप है, जो आज पहला संडे है, नेक्स्ट संडे और उसके नेक्स्ट संडे 17 तारीख और 24 तारीख को भी ये निःशुल्क सेम कैंप जारी रहेगा। उसके बाद अगले महीने दोबारा जब प्लानिंग होगी तो फिर से अनाउंसमेंट की जाएगी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। आपका बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ है हरीश संथलिया जी और ये बहुत ही बढ़िया और निःशुल्क काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो हम चैनल के माध्यम से ये अपने दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं जिन किसी ने भी अभी तक इस कैंप में शामिल नहीं हुए वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले। मोहन मेडिकल में आपको बताना जो चाहूँगा 24/7 ये बिल्कुल खुला रहता है और आपको डिस्काउंटेड रेट में आपको जो मेडिसिन मिल जाती है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जा रहा है। डॉक्टर्स की यहाँ पर सुविधा है। तो यहाँ पर ये सारी सुविधा के साथ में आप इसका ज़रूर से लाभ लें। तो लीड हिंदुस्तान की टीम यहाँ पर आई है सारे कवरेज करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, लीड हिंदुस्तान चैनल आपको ले आया है मोहन मेडिकल में जो आज फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रहा है। तो अभी हम बैठे हैं डॉक्टर यामिनी के मैम के पास। तो मैम, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर ऑफरिंग एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? We are offering a kind of service to the patients who are having dental problems or teeth related queries. Basically dentist. I'm dentist. Yeah, okay. I'm basically a dentist. So I'm providing the service to the patient who visit near us for dental related problems like tooth pain, tooth cleaning, for polishing, for misalignment of the teeth. All kind of All denting. kind of dental problems, yes. Okay. So what do you think about this kind of services they are providing? So is this good for the society, and how the mass of the people can benefit from this? Just a little bit. So, see, people like some low class people who can't afford to get into big clinics, who can't give OP. So I'll see here OP and we'll send to our clinic. So there will be concession of little 5% or 10%, and we'll provide treatment there. Yeah, and if they have any problems like tooth pain or something, so there is no OP here. So people can come to our clinic. After post treatment, you will provide the service to your clinic with the discount. With the discount. Yes. And we'll give our clinic
all the details. So if the same patient enter in our clinic, so we'll not charge any OP, and we'll give some discount of some little bit of 5% or anything. And one more question: what, like, in day-to-day life, the teeth which are getting damaged, not what you suggest to the normal people, so how they can keep their teeth normally very healthy? Just normal suggestion. What can they do? Suggestion: regular visit to the dentist. Yes, definitely. Within 3 months, there should be regular visit to the dentist for their full mouth oral hygiene. People, they should be very keen about their oral hygiene also, apart from the whole body. So every for 3 months or every 6 months, they should come to a dental clinic or dental checkup. अभी हम लोग हैं डॉक्टर श्रीषा के पास, वो गायनोकोलॉजिस्ट। तो उनसे जानते हैं कि जो आज की जो सर्विस है और बाकी वो क्या सर्विस प्रोवाइड कराती हैं सोसाइटी में और लेडीज से रिलेटेड। मैम, व्हाट्स I'm Dr. G. Sirisha. I'm a gynecologist at the Mohan Medical Center, and here today we are providing free medical services apart from gynecology, all the other branches. And I am the particular gynecologist concerned with the specialties, and we are providing all the services concerned with the pregnant women, like high risk pregnancies and endocrinological or diabetes, thyroid in pregnancies, early preterm deliveries, and we are there to provide all we are dealing with all high risk cases regarding pregnancy, and apart from that all the general gynec cases like white discharge and puberty disorders. Nowadays puberty disorders, PCOD is the burning problem in the society, and almost 9 out of 10 young girls, teenage girls are suffering from PCOD, and this will be rise to 10 out of 10 in the nearest future. And we are ready to provide all the services regarding the treatment of PCOD. And the most burning problem is the cervical cancer, and we are providing cervical cancer tests and the cervical cancer vaccines and the information about that. Apart from cervical cancer, all the gynecological cancers related to women, like breast cancer, endometrial cancer, ovarian cancer, we are ready to treat them. And other than treating, the best part is diagnosing at the earliest step. If we diagnose, if at the present day, present modern medicine available, we can definitely diagnose 90% of the cancers at the earliest stage, and this will definitely increase the lifespan of the person if the cancer is diagnosed at the earliest, especially gynecological malignancies like breast cancer, ovarian cancer, endometriological cancers, and all. And for the cervical cancer, we have the cancer vaccine available, and if it's taken at the age of 9 to 14 years, 2 doses are enough. And beyond 14 years, and if it's taken before marriage, that would give a more percentage of protection to all the ladies. But we suggest every lady in the reproductive age to get vaccinated with the HPV vaccine. Okay. दिस इज सच नाइस इन्फॉर्मेशन। मैम, थैंक्स फॉर टाइम। नमस्कार दर्शकों, लीड हिंदुस्तान में आप लोगों को स्वागत है। मैं हूं मुकेश अग्रवाल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री गारो। तुमसे जानते हैं जो आज मोहन मेडिकल में जो भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो रही है उसके बारे में, वो क्या महसूस करी और क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मैम, व्हाट सर्विस यू आर ऑफरिंग? I'm a general physician here. I'll be looking for fevers, like hypertension, BP, diabetes, lung infections, asthma, like anemia, where the blood conditions are low, heart conditions, liver. We are looking of all the conditions here. I am a general physician here. So this kind of service they are offering मोहन मेडिकल। सो what you have to think about that? आप क्या इसके बारे में सोचती हैं? So this is good for society, good for people. What do you think? Yeah, this is good for the society. Like this is a multi-specialty here we are offering. There is also orthopedic service, dermatology service, pulmonology service also. Here, as we are the multi-specialists available here, we can give cross-reference also. Patient need not roam here and there. So we are offering all the services here. It's good if you come here. वन मोर थिंग, आप जैसे नॉर्मल जो लोगों को
get fever, normal fever and normal cough. So उस कंडीशन में what do you suggest to them? उनको क्या करना चाहिए तुरंत? Like it may be mostly due to viral infection. So viral infections, rather than using the antibiotics, we can simply take the paracetamol medication for the fever. We can use steam inhalation at home for normal cough and fever. But if the cough and fever, if it is lasting more than for 3 days, then you need to compulsory visit the doctor, because you need not know whether it is a normal fever or whether it is due to some bacterial or viral infection. If it is more than 3 days, you need to visit a doctor. थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आए हैं मोहन मेडिकल में, जो फ्री मेडिकल सुविधा आज पेशेंट को प्रदान कर रही है। तो आज अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रवि तेजा, जो है डायबिटीज से रिलेटेड जो भी बीमारियां उनके बारे में देखते हैं। सर, मेरा नाम डॉक्टर रवि तेजा है। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। इसका मतलब डायबिटीज़, थायराइड एंड सारा हार्मोन का बीमारियों को हम डील करते हैं। इसमें आज इस कैंप में हम ये कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को डायबिटीज़ के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस अवेयरनेस को हम हाईलाइट करके पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। एंड इसके अलावा थायराइड के बारे में भी हम समझा रहे हैं, और ओबेसिटी जिसको वेट ज़्यादा है ये भी हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स रिलेटेड में सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स का भी आता है, एंड बच्चों में भी ये सब बीमारी हो सकता है। इसमें हाइट रिलेटेड, वो भी हार्मोन रिलेटेड ही होता है, एंड बच्चों में भी थायराइड एंड शुगर का प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये सब हम देखते हैं। तो आज फ्री टेस्ट भी कुछ करवाया है हमने, और ट्रीटमेंट भी एडवाइस किया है। काफ़ी मरीज़ों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस कैंप से। और दूसरा था, जैसे कि ये जो मेडिकल का फ्री सुविधा दे रही हैं मोहन मेडिकल वाले, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आना चाहें, तो उसके जो भी लोग आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग उसको क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डायबिटीज़ रिलेटेड आता है, तो उसका आप क्या सुझाव दे रहे हैं? काफ़ी लोगों को पता नहीं है, ट्रीटमेंट काफ़ी बदल चुका है डायबिटीज़ का, पहले जैसा नहीं है। काफ़ी नया दवाई आया हुआ है। जिस दवाई पहले जो दवाई थे वो सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते थे। आजकल 2-3 साल से जो नया दवाई या टाइप्स आया हुआ है, वो शुगर कंट्रोल के साथ हार्ट और किडनी दोनों के प्रोटेक्शन और सेफ्टी भी देते हैं। ऐसा दवाई भी अभी अवेलेबल है। तो सारे डायबिटीज़ मरीज़ों को ऐसा नया दवाई का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हम ये दवाई एडवाइस कर रहा है, ये कैसे लेना है, कौन सी डोज पे लेना है, वो उम्र के हिसाब से एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस। किसी को मान लीजिएगा, किसी को डायबिटीज़ के साथ हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, वो भी हम कंसिडर करके उसके हिसाब से हम डोसेस चेंज करना, टैबलेट्स का एडवाइस देना, ये सब हम कर रहे हैं। इससे फ्यूचर में अगले 5 या 10 साल में क्या क्या रिस्क हो सकता है डायबिटीज़ मरीज़ों को, वो सब हम 90 to 95% कम कर सकते हैं। ये नया दवाइयों से बेनिफिट है। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग आए हैं डॉक्टर कृष्णा तेजा, जो हैं ऑर्थोपेडिक्स, ये और जॉइंट से रिलेटेड जो भी बीमारियां उसके बारे में आपको इलाज बताते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, व्हाट्स I am Dr. Krishna Teja. I am a joint replacement surgeon and spine surgeon. So you can ask me anything regarding orthopedics and joint replacement. So in day-to-day life, people are getting very trouble with the joint replacement. It's a common thing. Yes. Like even is from the 40 people are getting joint pain. So what do you suggest for a common man to do day-to-day thing that they can avoid this kind of pain? So commonly, the most common joint in the human body to wear out first is the knee joint, because most of the body weight falls on the knee joint. And knee joint is a kind of joint which is prone to wear out. So in Indian population particularly, this wear out we see is because our habit of squatting. So Indian population commonly squat on a regular basis, and we cross-leggedly sit. So sitting cross-legged and squatting are two major factors for the joint to wear out early. And one more thing is, we don't have elevators in every place. We'll have to climb stairs. Even this climbing stairs will aggravate the process of wearing out of the joint. So what I would suggest is, avoid squatting,
avoid cross leg sitting, avoid stairs as much as possible, use elevators or escalators. So these are some of the lifestyle modifications which I would like to suggest. And one more thing I would like to suggest is working out. Working out and walking. See, walking doesn't wear out your joint. What we commonly perceive is the more we use the joint, the faster it is going to wear out. But that is not the thing. The more we use the joint, the stronger the bones get, the less the bones wear out. So as per you, like for by changing the way of life, we can avoid somehow the pain of the joint. Like, Yes, and, definitely. and what stage of life you will suggest to do the joint replacement surgery? It is good for the age of 60 above people. Joint replacement, usually the joint lasts for 15 to 20 years. 20 years is the maximum. After 15 years, we start getting complaints, the same complaints which they initially used to have. So then after 15 to 20 years, we'll have to perform revision surgery, which is a more challenging surgery, which requires more time for rehabilitation. So what happens is, in Indian population, and it is very expensive compared to primary replacement. Revision is more costlier. It is twice as expensive as primary replacement. So in Indian population, most of us are not able to afford for the revision surgery. So what we do is we try to postpone it as much as possible. We try to push it till 60. At 60, if we get operated, 15 to 20 years from there is about 75 to 80 years. So our average life expectancy is about the same thing. So with only one surgery, the person can bail out. Thanks, sir. Thanks for your suggestion and information for the society. Can you tell about the what kind of service and what you are doing for the patient? This is for bone density machine. This is operating for bone density, sir. First, you have to right leg. You have to put it the right leg. After that, the machine it will show the density level, sir. The age please, sir. 48. Okay. We have to enter the age. Yes. First enter the age, sir. Okay, sir. The measurement is coming, sir. So what is this? This is reading, sir. Actually, three stages is there, sir. 0 to up to -1 normal range, sir. 0 to up to -1 normal. -1.1 to -2.5 osteopenia. Osteopenia meaning calcium level below starting stage, and -2.5 below osteoporosis, the severe condition. 3 stages is there. This person is normal range. Yeah, normal and border stage. That's all. So if you suppose anything not good, so what you suggest? What you suggest for that? Take the calcium. You take for calcium foods, sir. These are calcium related foods. Vegetarian and non-vegetarian both are available. You can go through these food items, sir. लीड हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं मोहन मेडिकल कैंप में, जो कि फ्री कैंप यहाँ पर चला रहे हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स है, यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर बहुत सारे जो जांच पड़ताल है, जो कि रोग विशेषज्ञ है, उनके बारे में राय देंगे। और फ्री यहाँ पर मेडिकल कैंप हो रहा है, इसके साथ में कुछ टेस्ट भी यहाँ पर जो होते हैं वो फ्री हो रहे हैं। तो इस संबंध में हम आए हुए हैं मोहन मेडिकल कैंप, और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मरीजों से। तो हमारे साथ में है, आपका नाम? वी राजू। वी राजू जी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सीतमधारा विशाखापट्टनम में ही हूँ। ये सीतमधारा विशाखापट्टनम जैसे आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और किस बीमारी को लेकर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के हिसाब से आए हैं, और क्या टेस्ट करवा रहे हैं आप? मेरा एक्चुअली शुगर है, ब्लड शुगर है। मैं रेगुलरली दवाई खाता हूँ, तो उसके लिए टेस्ट कराने के लिए आया, और लीवर को कुछ प्रॉब्लम इशू आया था बीच में, तो उसको भी थोड़ा दिखाने आया था। बट अभी यहाँ पे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट जो प्रेस्क्राइब किए हैं वो ट्रीटमेंट अभी करवा रहा हूँ। और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, दे आर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और सब कुछ अच्छा है। मेरे को जहाँ तक मालूम है
डॉक्टर्स भी जानकारी रखते हैं। किस डॉक्टर्स के पास आप आए यहाँ पर? डॉक्टर तेजा डायबिटिक। तो आज आपने कोई फीस पेमेंट की है या फिर कोई टेस्ट के लिए अमाउंट आज आपने पे किया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किए। फ्री मेडिकल कैंप है तो फ्री में ही सब टेस्ट किया हुआ है, और फर्दर कुछ रहेगा तो वो टेस्ट के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्री मेडिकल कैंप में मरीज पहुंच रहे हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पर चेकअप करवा रहे हैं, फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं और जो भी फ्री जो सलाह हो रही है वो ले रहे हैं, तो इनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। चलिए हम लोग बात करते हैं अभी पेशेंट से. సార్ మీ పేరేంటి? గణేష్. మీకు అలాగా తెలిసింది మెడికల్ క్యాంప్ కోసం అలాగా తెలిసిపోతుంది మనకి ఫ్రీ సర్వీస్కి మెడికల్ క్యాంప్ కోసం అలాగా తెలిసి వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టాడు సార్. వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టారా? దీని గురించి ఇచ్చారా అక్కడ? దీని గురించి ఇచ్చారా? దీని డెంటిస్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది మీకు? ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది చూపించు. మళ్ళీ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్కి పిలిచారా? మీ పేరేంటి? నమస్తే సార్, నా పేరు సూర్యలక్ష్మి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా మీరు? డాబాగడ్డిన్ సార్. అలా తెలిసిపోయింది మీకు ఈ మెడికల్ ఫ్రీ సర్వీస్ క్యాంప్ కోసం అలా తెలిసిపోయింది? మా దగ్గర అబ్బాయి చెప్పాడండి. ఆయనకి వాట్సాప్లో వచ్చింది. వాట్సాప్లోనే. దీని గురించి ఏ చూపించుకు వచ్చారా మీరు? అంటే హెల్త్ బాడీ గురించి వచ్చాము. నార్మల్ మన జనరల్ ఫీ ఇప్పుడు చూపించలేదు, ఇప్పుడు చూపిస్తా. మీ పేరేంటి అమ్మా? భవానీ అండి. మీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా? డాబాగడ్డిన్. ఏ ప్రాబ్లం గురించి వచ్చారా మీరు? బాడీ చెకప్కి వచ్చి.